Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed several points of terminology of accounting. I hope you all are understood. And in this lecture, again we are going your new points of terminology of accounting. Okay students, so today first point is receivables. So what is the receivable? Any amount to be received by businessman in the future from any person is known as receivables. मीन्स कोई भी अमाउंट्स होती है वो बिजनेसमैन को क्या होती है इन फ्यूचर रिसीव होगी फ्रॉम एनी पर्सन. An amount to be received by the businessman in the future from any person is known as our receivables. Understood students? And next point is payable. So inverse of receivables का पूरा उल्टा पॉइंट सही है. Payable means any amount to be paid by the businessman in the future to the any persons. means businessman को in future कोई भी amount क्या करनी है पेड करनी है कोई एक persons को, तो जो amount उसको पे करनी है its amount is becomes our payable. Understood students? So any amount to be paid by the businessman in the future to the any person is known as payable, and in receivables any amount to be received and in payable is paid. Understood students? Okay, good. Then next point of terminology of accounting is bills receivables. Okay students, so what is the bills receivable? A seller who is entitled to receive money from the debtors can draw a bill of exchange upon the debtors and that bill is accepted by the debtors. Means कस्टमर्स जो होते हैं, कोई बिजनेसमैन ने अपने ओन कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया हुआ है. सो उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, मनी रिसीव करने के लिए बिल्स ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो बिल्स उसने ड्रॉ किया है वो किसको सेंड करेगा, अपने कस्टमर्स को, जो डेटर्स है उसको, जिसके पास से उसको फ्यूचर में मनी रिसीव करना है. और जो बिल उन्होंने ड्रॉ किया है और वही बिल किसने एक्सेप्ट किया, डेटर्स ने. सो इट्स बिल इज अवर बिल्स रिसीवेबल्स. सो बिल्स रिसीवेबल्स मीन्स क्या है कि ऐसा बिल कि जिसके ऊपर हमें क्या होगा, कस्टमर्स या डेटर्स के पास से हमें मनी रिसीव्ड होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. देन बिल्स पेबल्स. सो a bill of exchange is bills payable in accounting term for the buyer who accept it because he has the liability to pay the specified amount of such bill on due date. अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस लेक्चर में क्रेडिटर्स का, कि मैंने कोई पर्सन के पास से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है, तो उस टाइम पे मुझे क्या होगा कि जो पर्सन के पास से मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है वो पर्सन मुझे क्या करेगा, बिल्स ड्रॉ करके मुझे सेंड करेगा, और वही बिल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वही बिल एक्सेप्ट करके मुझे उसके एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा, मनी पेड करना पड़ेगा ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So again I will repeat it. A bill of exchange is bills payable in accounting term for buyer who accept it because he has a liability to pay the specified amount of such bill on due date. Means bills payable means ऐसा bills कि जो bill के ऊपर हमें money paid करना हो. Understood students? Good. So next point is cost. So what is the cost students? To produce any product expenses are required. मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते तो उसके लिए एक्सपेंसेस हमें रिक्वायरमेंट होते हैं. सो द टोटल ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज कोस्ट. मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस है उसका टोटल होगा वो हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल. When we produce one bag, so production of bag we require zipper, belt and cloth. So for one bag zipper cost is rupees 50. For bag one belt is 50 and cloth के लिए कितना रुपीस हमें रिक्वायरमेंट हो गया, 100 रुपीस. So total of these expenses is known as our cost. So total is rupees 200. So total cost of one bag is 200. Understood students? So what is the cost? Again I will repeat it. To produce any product expenses are required. The total of these expenses is cost. Understood students? Good. Then next point, voucher. Voucher means bill.
voucher is a written document of business transaction and a type of transaction is determined on the basis of voucher. So voucher क्या हमारे लिए written document है और कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन होता है हाउ टू डिटरमाइन सो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर. ओके स्टूडेंट्स. So next point is depreciation. So what is the depreciation, students? Every year the value of asset is reduced by certain rate. Amount which is reduced is called depreciations. Means कोई भी assets होती है हमारे बिजनेस की उसके ऊपर क्या एवरी ईयर कुछ अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट्स क्या होती है रिड्यूस होती है. सो जो रिड्यूसेबल अमाउंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी इट्स कॉल्ड अवर डेप्रिसिएशन. सो अगेन आई विल रिपीट इट. एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन रेट. अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड depreciation. Understood students? And depreciation is non-cash expense of our business. Understood students? Depreciation क्या है हमारे बिजनेस के लिए non-cash expense है. Then next point of terminology of accounting is bad debts. So what is the bad debts? When goods sold on credit by the business person to whom goods sold is debtors. Means जिसको हमने जो पर्सन को हमने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट पे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा डेटर्स. सो द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मीन्स जो डेटर्स जो पर्सन को हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है उसके पास से हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है. मीन्स द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स. सो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी इट्स बिकम अवर बैड डेब्ट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो बैड डेब्ट इज नॉट एन एक्सपेंस बट लॉस ऑफ बिजनेस. बैड डेब्ट्स क्या है बैड डेब्ट्स क्या है हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है बट क्या है वन टाइप ऑफ लॉस. ओके स्टूडेंट्स. सो इन दिस लेक्चर अगेन आई कवर your several points of terminology of accounting. Okay, so I hope you all are understood, and in next lecture again I will cover your several points of terminology of accounting. Okay students, thank you.